सो हाई गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग एंड रात के 3 बज रहे हैं और मैं मेरे फैमिली के साथ वी आर गोइंग टू जबल जैस। सो जबल जैस इज़ अ माउंटेन इन UAE और इट इज़ अराउंड 128 किलोमीटर्स दूर दुबई से। सो यहाँ का रोड ट्रिप हमारा एक शॉर्ट रोड ट्रिप है आज और मैंने सोचा कि हम अपना पहला व्लॉग भी इसी में बना लूँ। सो मैं आपको अपडेट करूँगा कि दुबई के गर्मी से बहुत ही कम यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस आज है जबल जैस में। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना जबल जैस का एक राउंड मार के आ जाए, बिकॉज विंटर में यानी कि ठंड में हम लोग बहुत गए हैं जबल जैस। इट इज़ अ माउंटेन, तो मैं आपको आज दिखाऊंगा उसकी ड्राइव कितनी ज़बरदस्त रोड UAE गवर्नमेंट ने इस माउंटेन पर बनाया है। आपको लगेगा नहीं कि ये माउंटेन है, लाइक इतने ज़बरदस्त रोड्स और यहाँ का सिस्टम, यहाँ के मार्किंग्स, रोड मार्किंग्स एंड एवरीथिंग इज़ रियली वेरी गुड। सो मैं आपको अभी दिखाऊंगा हमारी रोड ट्रिप। जबल जैस माउंटेन हम एंटर कर चुके हैं दुबई से ऑलरेडी। सो वी हैव अराउंड 90-95 किलोमीटर्स हम लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं विद इन एन आवर एंड अब हम लोग माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगा इस माउंटेन की ड्राइव कैसी होती है। एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel. And this is my first vlog, Traveler Saifan पे, and I'll try to give you good videos ऐसे ही future में. So now we'll see the road trip and then I'll show you the mountain also. Hi guys, we are right now on the top of Jabal Jais. This is where we can so see, this is the mountain top. आप देखोगे ये mountain top का, this is how they have done proper systematic to climb up the mountain. And hi Zen, hi Zen, say hi. Yes, I'm just drinking my Monster Zero Claro. This is Jabal Jais, guys. So this is Jais Sledger, जो कि है जबल जैस माउंटेन टॉप पर। so, अगर आप देख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जो ये स्लेज है ये टोटली ऊपर जाती है एंड ऊपर जो लाइट है वहाँ पर सॉरी bear with me, आज ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आई डोंट नो मच अबाउट व्लॉगिंग, बट धीरे धीरे आई एम श्योर हम लोग साथ में ही देखेंगे कि मेरी व्लॉगिंग स्किल्स कैसे अच्छी हो जाती है। आई होप सो। सो माई फर्स्ट व्लॉग। सो दिस इज़ द माउंटेन टॉप, यू कैन से नॉर्मल पीपल कैन ट्रैवल हियर। ये है जबल जैस स्लेजर एंड सो बेसिकली यहाँ पे दे हैव गिवन ऑल द फैसिलिटीज़। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक वॉशरूम भी है जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों के लिए। यहाँ पे लोग ठंड में, विंटर्स में कैंपिंग करने आते हैं with all electricity facilities, water facility,
प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी है यहाँ पे. यू कैन कम विथ योर फैमिली ऑन द वीकेंड्स बारबेक्यू के लिए या गेट टुगेदर के लिए. So this is a proper washroom on the mountain top. If you can see the cleanliness and everything. So this is not where people live, okay? They have a hand wash and they have water bottle. In fact, they have a dustbin. This is a mountain top. So this is how clean Dubai is. So you just saw how clean and how good facilities UAE government provides us. So it's not like, you know, you're living in the UAE and working in the UAE. You are an expat from any country. In fact, from many countries there are people here, and we all are living really very good life. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Thanks to and all praise to be Allah. All praise to be Allah. You know, also the government, the UAE government, how they are giving us good facilities, how they are giving good facilities to the tourists. It's commendable, and kudos to the UAE government. Now guys, this is my first vlog. I hope you like this vlog. So all on the turnings there are many places here where you know, people come. Wow, this was a good car. I don't know much about cars, but I'm fond of cars, but I don't know much about cars. Now you can see they have given a picnic spot here. So यहाँ पे लोग आते हैं during winters. They park their car, they put out tents with all the family, get together hota hai. There's a small shop here. Now during summer time the shop is closed because not much tourists or residents come here. So this is the shop where you will get all the camping materials. You can even get, you know, snacks and everything. This is where you can sit, and people here all over there, they you know, वो लोग अपना टेंट्स डालते हैं and they are here like this. And so during winters people come here and वो लोग अपना barbecue करते हैं. So after that they have to put the charcoal in these boxes. So because, you know, lot of animals here, आपको mountain goats दिखेंगे. They literally climb the mountain here and there. They literally climb the mountain, and it's very easy for them because they are mountain goats. It's not like a normal goat. यहाँ पे they do proper camping and all, and you know, when the sun rises, Jabal Jais is totally different. So आपको रात के वक्त totally different दिखेगा and दिन के वक्त totally different दिखेगा. So this is Jabal Jais and the sun rises from there and it's very beautiful. So now totally stars and all आपको दिखेंगे. World's longest zip line you will get in Jabal Jais. So if you see on the top over there, on the top, वहाँ से zip line निकलती है and it goes all the way to there. So world's longest zip line. अगर हम लोग सुबह तक यहाँ पे है, like sunrise तक, तो मैं आपको definitely दिखाऊंगा यहाँ का zip line. This is my car, Toyota Yaris hatchback, and this is my family. Here is my wife and Zain and his sisters. So even if it is early morning, people are here. You'll get people even in winters. They come out and park. So now you can see sunrise is it's sunrise and sunrise from that side, and when जब sunrise हो जाता है, it looks so beautiful. So you can see it's proper systematic way.
This is how the खुदा की खुदा Zen. This is called a mountain. This lives on a mountain. Down there, climbing mountain down. Okay. Not drink juice. Zen, don't feed. See the no Zen, it's plastic, they cannot eat it, and that is paper. So see, that's why you should not throw. You should not throw. Come here. You should not throw, Zen. They eat this kind of things. You should know this is plastic. It cannot eat. The goats cannot eat plastic. That's why you have to throw the plastic in. This is not our plastic, okay? This is our. No. It does not drink chocolate milkshake. No. It does not drink chocolate milkshake. Don't give her. No, Zen, it does not. That's a plastic. You cannot eat. Go. No, you cannot eat plastic. Can you eat plastic, Zen? You cannot eat plastic. No. The goat does not drink. The goat does not drink chocolate milkshake. No. But it does not drink chocolate milkshake. Throw the plate. It's not ours. Throw the plate. Go throw it in the dustbin. Pick up that plate and go throw it in the dustbin. See that? Oh, this is not right. Go. Throw it in the. Then did you throw that plate in the dustbin? Pick up that plate. Come. Good. Now what have you done to yourself? All the chocolate milkshake, it is on your shirt, t-shirt. Come here. Come. Say do not litter. Say do not litter. Say Zen. Litter. See, you have to throw it in the dustbin. Say Zen, please do not litter. Yeah. Thank you guys. Say like, share and subscribe. Throw anything. Okay, thank you. Come. So see, on Jabal JS you will get this kind of parking spots where you can park and you can enjoy camping or barbecue with your family and friends. So there's a small shop here which I was showing it to you during the night time. Now this is sunrise, okay guys, it's like around 5 o'clock, 5:30 now, and as soon as there's total sunrise you'll see a perfect picturesque place. You can come with your friends, do barbecue, cook food, eat here during winters. This is Jabal JS Sledger. Beautiful mountain.
सो गाइज जस्ट अ क्विक अपडेट, अब है दिन का टाइम और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिस्टम्स कैसी दी हुई है। जब आप ऊपर आ रहे हो जैसे, यानी कि व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेन, तब 2 लेन आपको डेडिकेट की गई है, और जब आप नीचे जा रहे हो, यानी कि जब आप माउंटेन से नीचे जा रहे हो, तब आपको ये लेन में रहना है एंड आप ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ येलो लाइन है। सो एंड स्पीड लिमिट है 40 अराउंड, yes 40 and you can go maximum up to 60। यहाँ पे ऐसे टेंट्स दिए गए हैं, सो यहाँ पे शॉप्स रहते हैं, यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, यू कैन बाय थिंग्स। So this is a beautiful sunrise on Jabal Jais mountains. So in daytime only you will get to see the beauty of this mountain, mighty Jabal Jais. So here you'll also have toilets over there, and then you'll have a mobile tower. This is Doos Tower. So guys, ये है जबल जैस की ब्यूटी, दिस आर द माउंटेन्स। एंड जबल जैस पे और एक चीज़ आपको दिखेगी जो है बेयर ग्रिल्स एक्सप्लोरर कैंप। यस, आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड यू नो यू कैन ऑल्सो डू कैंपिंग हियर। दिस इज़ बेयर ग्रिल्स एक्सप्लोरर कैंप। आई विल ट्राई टू शो दिस टू यू अप क्लोज, बट व्हेन इट रेन्स इन UAE it looks super good. Let me just try to focus. This is Bear Grylls Explorer Camp.